Hello students. So let us now come to various oxides of nitrogen which are popularly known as NOx, sometimes NOx. सबसे पहले हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की नॉर्मल वैलेंसीज को देखना होगा. नाइट्रोजन हैज़ 3 वैलेंसी एंड ऑक्सीजन इज़ अ डाइवैलेंट एटम. तो आइए शुरू करते हैं सबसे सिंपल ऑक्साइड से, दैट इज़ NO. NO में नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम केवल दो ही एटम्स हैं और दोनों की वैलेंसीज अलग हैं. हम इसमें दोनों की वैलेंसीज को इक्वली सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. सो देर इज़ ओनली वन वे वी कैन डू. 3 और 2 का जो मिनिमम है वी विल डू दैट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ NO. नाउ ऑक्सीजन हैज़ शेयर्ड इट्स 2 electrons out of 6, so there will be 2 lone pairs on that, and nitrogen has 1 lone pair, and yes, there is an unpaired electron. So it is clearly paramagnetic molecule, right? ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए. इसमें ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाई है इसलिए ये काफ़ी रिएक्टिव भी है. अब आइए N2O में चलते हैं. N2O में आप एक तरीका देखिए. इसमें सबसे पहले 3 एटम्स को लाइन में लगा दीजिए और ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि नाइट्रोजन इज़ एट द सेंटर, राइट. अब आइए इनकी वैलेंसीज देखते हैं. ऑक्सीजन हैज़ 2 वैलेंसी, this nitrogen has 3 and this nitrogen again has 3. So we have to do some kind of rearrangement so that the central atom has valency equal to the sum of the terminal atoms. तो उसका तरीका अपने पास है. हम नाइट्रोजन की वैलेंसी को बढ़ाएंगे और घटाएंगे भी. If you do n plus, it will become on the pace of carbon and will have 4 valency, right? This oxygen has already 2 valency and this n minus will come over here, will surely have valency equal to 2. अब आप इसको अरेंज कर दीजिए. यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दीजिए और इधर एक डबल बॉन्ड बना दीजिए. यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर्स रह जाएंगे और नाइट्रोजन माइनस हो गया था तो इट विल बी जस्ट लाइक ऑक्सीजन. सो दिस इज़ नाइट्रस ऑक्साइड एंड दिस इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट. You can also do one more structure of that in which you will have a triple bond between nitrogen and then there is a nitrogen over here and there is a single bond between oxygen. This time the charges will be like this. Central atom will be definitely having plus, this will be 0 and this will be surely minus, and lone pairs are like that. It has got 2 dots, there is no lone pair over here, and it has got how many? It has got again 6 dots because there's O minus. When you do O minus, it comes over here with a place of fluorine and has a valency equal to 1. So this kind of rearrangement is very interesting. Now let's come to NO2. Unfortunately हम यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, but we should know the structure. Nitrogen has a trivalent atom, so it will surely form a double bond with that. Now this oxygen needs something, so what we'll do, we'll do this plus and do this as minus. Now you draw a single bond, so this is NO2 structure, right. Now you could see nitrogen had 5 valence electrons, plus की वजह से it has now 4, so there is 1 electron over it which is making it a paramagnetic molecule. So you should know that this is also a paramagnetic molecule, right. अब N2O4 is just the dimer of NO2. It will become self-joining through this unpaired electron. The structure is very simple. You can now visualize this. There are nitrogen atoms. With this unpaired electron, you have this. And then you attach oxygen on this side, double bond. Then single bond O. You do formal charges, plus minus. You again do here, double bond oxygen, single bond O, formal charges. You can draw 4 resonating structures for this. Why? 2 resonating structures of cis and 2 for trans. So that's amazing. Now let's come to N2O3, नाइट्रोजन sesqui oxide और डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. इसमें आपको देखना होगा, पहले 2 नाइट्रोजन आप आमने सामने रखिए और उसमें सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, right. Now how will attach 3 oxygen? 2 oxygen will go over here, 1 with here, and definitely there is a formal charge, minus and plus, and this nitrogen will surely have a doubly bonded oxygen which is over this side. Now definitely there is a lone pair over it,
So this is N2O3. Now let's come to N2O5. अभी हमने N2O4 बनाया था, तो एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 5th ऑक्सीजन रख दीजिए, तो it will be like this: nitrogen, then oxygen, then nitrogen, and then you have the remaining structure like that: double bond oxygen, single bond O, formal charges अभी रखेंगे, double bond oxygen and single bond O. So now let's the formal charge. This is 4 bonds, the plus, this is single bond, the minus, right? So always remember, when atom changes its valency, that means it is having some kind of formal charge. So if it atom is moving in this direction, it gets minus. If atom is getting in this direction, it gets plus. So this is amazing thing you can use in your science and learn the structure of oxides of nitrogen. Thank you.